Good morning, students. Please switch on your videos. We'll start within a minute. Good morning, sir. Good morning. Please switch on your videos and then we will start. Kanika and Kajal, please switch on your videos. Kajal Nagar, please switch on your video. Kajal Nagar, are you there? Okay, so we'll continue with the chapter on 3D geometry. We have completed all the concepts. Okay, and we have also done the questions from the NCRT book, right? So you guys have practiced some questions in this. See, this is a very, very easy chapter. From a concept perspective, the formulae are pretty much similar to the ones which you have done in the coordinate geometry in class 10th also. Okay, so not much is new. The concept of coordinate planes, okay, the octants, those are some new concepts. So those important thing is कि आपको उसको visualize करना आना चाहिए, right? So octants पे हमने काफी questions already किए हैं, so you should now be very clear, okay? So octants के लिए पहले आप quadrant identify कर लीजिए और फिर depending on the value of z, if it is a positive value then the octant का जो number है वो quadrant के number के बराबर है, अगर वो negative है तो octant का number quadrant plus 4 है, ठीक है? That will be the easiest way for you to find the octants if it is asked. Okay, then we talked about the distance formula. This is the standard formula. You did it for 2 dimension also. We add the third dimension into it. Nothing new there. Similarly, the section formula is exactly the way it used to be in the 2 dimension. So it doesn't make a big difference. Okay, there is just a z coordinate also included. External division, midpoint formula, which is internal division ka ek special case. Okay, now let's do some more questions to get a better hold on the concepts. Okay, find the coordinates of a point equidistant from the 4 points. Okay, so the coordinates of 4 points are given and we have to find a point which is equidistant from all the 4 points. Okay, so how would we find such a point which is equidistant from 4 given points? Okay, so obviously if we are talking about equidistance, so what we are going to equate is distances, right? So what would we say? Let the point be, let this be our point. Okay, so if this is the point, then we can find PO, we can find PA, we can find PB and so on, right? Now, what we will do for ease of calculation, okay, if the distances are same, then the square of distances are also same, right? So we will not take the square root here, okay, that will make our life easy. So we can say, for instance,
OP square, okay, is equal to AP square. Okay, so what is OP square? X minus 0 whole square plus Y minus 0 whole square plus Z minus 0 whole square. So OP square is simply. Now let's write the distance of this point from A. It will be X minus L whole square plus Y square, Y minus 0 whole square plus Z. Right? So these get cancelled out. We are left with x square is equal to x square plus L square minus 2xL. Okay, so we get x is equal to L by 2. Okay, now by symmetry we can see, right? Obviously, we can keep doing this. We can, let's say now say OP square is equal to BP square. Okay, but when we solve by symmetry, we can actually find that y will be equal to m by 2. And by putting OP square is equal to CP square, we will also get Z is equal to n by 2. Okay, so our point is L by 2, M by 2, and N by 2. Understood? So this question could have been very difficult if the choice of the points was not that simple. Okay. Now this is a pretty good question. If a parallelepiped is formed by planes drawn through the points 2, 3, 5 and 5, 9, 7 parallel to the coordinate planes, then find the length of edges of the parallelepiped and the length of the diagonal. How will we do this question now? Tell me. How would we? First, you have to visualize the question. If you can visualize the question, it's a very easy question. खुशी अपना वीडियो ऑन करिए आप. बताइए. हाँ, somebody can tell कि how will we do this question? Parallelopiped है एक, ठीक है. What is a parallelopipe? First tell me that. What is a parallelopipe? बेटे 3D शेप्स में आपने पहले भी पढ़ा है ना पैरेललोपाइप. तो देखिए क्यूबॉइड आपको सॉलिड होता है जिसके सारे फेसेस पैरेललोग्राम होते हैं. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो जैसे ये भी एक पैरेललोपाइप है, सॉरी, okay, which is with a cuboid, okay, because all the angles are 90 degree, but this could have been a parallelopipe like this, right? And even these phases, it's a bit difficult to draw like this, but it will look like a cuboid, but it's a parallelopipe. It looks like a cuboid in 2-dimensional because we can't draw it properly here. Okay, so all the faces are parallelograms. Now
we are drawing this and we are given only 2 points and the information that the phases are parallel to the coordinate planes. Now, coordinate planes are at what angle to each other? 90 degree, right? So ये parallelopiped क्या है actually? The parallelopiped is actually, although he has used the word parallelopiped, it is actually a cuboid, right? Why? Because all the angles are 90 degree. Why? Because the coordinate planes are at 90 degree. So एक simplification तो हो गया कि ये parallelopipe ना होकर actually ये केवल एक cuboid है, which is much easier for us now. अब next क्या? How will we do it next? केवल 2 पॉइंट से हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, तो वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं? लेट्स टेक दिस क्यूबॉइड हियर, लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल बिट बिगर. So it's a cuboid. So which points are these points? हमारा जो एक्सिस है वो ये है. तो which are these points? कहाँ होंगे? एडजेसेंट पॉइंट हैं, कौन से हैं ये पॉइंट्स? Can somebody tell me that? देखिए, यहां पे 2 है x की वैल्यू, यहां पे 5 है, y की वैल्यू 3 है, यहां 9 है, यहां 5 है, x z की, और यहां 7 है. यानी कोई भी वैल्यू सेम तो है नहीं, राइट? सो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वैल्यू सेम नहीं है. इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट कोई भी प्लेन शेयर नहीं करते हैं, राइट? तो यदि ये मेरा पॉइंट ये वाला ले लेता हूं मैं, 2 3 5, राइट? तो एनीथिंग ऑन दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, वो तो शेयर हो नहीं रहा. तो which is a point which is not on any of these planes? The only such point is this, right? The diagonally opposite point. So this is my point 5, 9 and 7. ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम कर भी इसीलिए पा रहे हैं कि none of these numbers are the same. क्योंकि अगर सेम होते तो वो क्यूबॉइड बनता ही नहीं. अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हमारा विजुअलाइज हो गया. अब ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस है, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि इनके एजेस की क्या लेंथ है. ठीक है ना? तो अब आप देख लेते हैं कि एक्स डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है 2 और 5 के बीच में. 5 माइनस, सो इट विल बी मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 2. इतना एक्स में चेंज हो रहा है. y में क्या चेंज हो रहा है? मॉड्यूलस ऑफ 9 माइनस 3. और z में कितना चेंज हो रहा है? मॉड्यूलस ऑफ 7 माइनस 5. यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, इसलिए मॉड्यूलस से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगा दिया. तो ये 3 है, ये 6 है और ये 2 है. तो लेंथ ऑफ एजेस आर 3 unit, 6 unit and 2 units. Understood? Now the question is find the length of the diagonal. Now that is very easy, right? Now there are 2 ways of doing it. One is कि आपको ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला ऑलरेडी आता है कि लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होता है, डायगोनल सॉरी क्या होता है ऑफ अ क्यूबॉइड, L square plus breadth square plus height square under root, right?
तो आप वहां से ये लिख सकते हो। Plus 9 is 45. Okay. तो 7 यूनिट्स। आप इससे भी कर सकते हो, बाय चांस आपको ये ध्यान में ना आए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बात एक ही। गॉट इट? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला इसी बेसिस से निकाला था। अंडरस्टूड दिस? सो ये विजुअलाइज करने का क्वेश्चन है, अदरवाइज इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच टाइम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. You could have directly written the answer. Yeah. How will we do this? Find the ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by x, z plane. How would we do this? Tell me. I'm waiting for your response. You should give me some response. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर जो वो पॉइंट होगा सर उसका y तो 0 होगा क्योंकि एक्सजेड प्लान से। Very good. That is what is important in this question. एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, doing the question is very easy, right? So the point P, let this be called A, okay? Let this be called B and let this be called the point P, right? Then the coordinates of P are going to be x, comma 0, comma z, right? And now it's easy because we are saying find the ratio, right? So अगर मान लीजिए ये मेरा point A है, ये मेरा B है, 2, 4, 5 and 3, 5 minus 4. There is a point P है यहाँ पे जो x, 0, z है. Let's say it divides it in the ratio k is to 1. So what are the coordinates of P? Okay, so k into 3, so 3k plus 1 into 2 by k plus 1. Then k into 5 plus 4 by k plus 1. And z coordinate is minus 4k, okay, plus 5 by k, right? And we know this value is 0. Actually अगर आपको ये objective type question है तो actually you don't even have to write these two. You can just write this one entity. सर इसमें जो P पॉइंट है सर ये इंटरनली शायद से एक्सटर्नली डिवाइड करेगा लाइन को, क्योंकि सर 0, 4 और 5 बीच में तो आता ही नहीं है। हाँ, you're right. You're right. तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा. Yes. So this will divide it externally. Okay. So we could have drawn it in that way also. Okay, and use that formula. Right? But if we didn't draw it and we didn't use the information you said, and we have just done it this way, would we get the answer? It's a very good point you made, Kanika. But we didn't do that. So will we get the answer now?
Let's see. Okay, let's see if we can still get the answer without using that information. Okay, so we will say 5k plus 4 by k plus 1 is equal to 0, which means k is equal to minus 4 by 5. Right? So what is the ratio it divides in? It divides it in the ratio 4:5 externally. ओके और इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नली 4:5. तो छोटा नंबर क्या है? 4 है, राइट? तो इसका मतलब ए जो है, हम a/b को 4:5 में डिवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब जो पॉइंट है किसकी तरफ है? जहां छोटा नंबर, राइट? तो यानी कि इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे आएगा पॉइंट ओ, पॉइंट बी, विच इज x, 0. ठीक है? तो कनिका, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड, वेरी वेरी गुड पॉइंट. लेकिन द वे द फॉर्मूला इज डिजाइंड, राइट, अगर हम ब्लाइंडली k:1 लेके भी चलते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है. और कौन सी वैल्यू छोटी है, उस तरफ डिवीजन है, राइट? यानी कि उस तरफ एक्सटेंड करने से हमें पॉइंट मिलेगा. अंडरस्टूड? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है इसमें, इस फॉर्मूले में, कि अगर हम कुछ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, एग्जाम है, हमें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको ये ज्यादा नहीं सोचना है कि एक्सटर्नल डिवीजन है इंटरनल है. हम कर देंगे और हमारा आंसर ही हमें बता देगा कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है. ये बहुत आसान बात है. लेकिन फिर आपकी जो नॉलेज है कनिका, दैट विल बी यूजफुल इन चेकिंग योर आंसर. ओके, okay, let's do another question. Let A, B, and C be 3 points forming a triangle AD. The bisector of angle BAC meets BC in D. Find the coordinates of point D. Okay, so what is this question telling us? So A, B, C, 3, 2, 0, 5, 3, 2. अब इसका बाइसेक्टर ऑफ BAC, ये दोनों एंगल्स मीट्स एट D. D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. हाउ वुड वी डू दिस? एनी आइडियाज? सी, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा उससे डायरेक्टली तो होगा नहीं, राइट? क्योंकि ना डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो पा रहा है फिलहाल, तो ना सेक्शन फॉर्मूला, राइट? ना कोई मिड पॉइंट की बात है यहाँ पे. तो कुछ हमें ज्योमेट्री का कोई प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, राइट? तो ज्योमेट्री का प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एंगल बाइसेक्टर, एनीबडी नोज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? Somebody remembers angle bisector theorem? What does angle bisector theorem say? That the angle bisector divides the opposite side in the ratios
of the adjacent sides. ओके, एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, यानी कि जो BD by DC, BD by DC is equal to AB by AC. ओके, तो एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स, राइट? नाउ इट्स इजी, राइट? बिकॉज अगर हम AB निकाल सकते हैं, हमें गिवन है पॉइंट्स, हम AC निकाल सकते हैं, तो हम BD इज टू DC की रेशियो निकाल सकते हैं, राइट? अगर BD इज टू DC की रेशियो निकाल लेंगे, देन वी कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज AB. AB is this. AB 5 minus 3, which is 2 square, plus 3 minus 1 square, plus 2 square. Okay, 4 is equal to 3. Okay. Now let's find AC. AC is minus 12 square plus 4 square plus 3 square. 144 plus 16 plus 9, which is 25. 169. Okay, which is 13. So 3 is to 13 आ गया रेशियो. BD is 2, so ये 3 है, ये 13 है. Now D के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला से. What will they be? Three into minus 9, right? 3 into minus 9 plus 13 into 5 by 16. Now 3 into 6 plus 13 into 3. And 3 into minus 3 plus 13. So this is minus 27 plus 65. So this is 38 by 16 and 57 by 16, 17 by 16. Okay. So this is the point. Okay. So it's an easy question if you can remember the angle bisector theorem. Otherwise, it's a very difficult question to derive the angle bisector theorem before solving this question. Okay. Determine the point in YZ plane which is equidistant from 3 points A, B, and C. Now, this is exactly the way we did one question just now. What do we have to do? What is this point P? What are the coordinates of P? 0, Y, and Z. 0, y, z. Yes, right? Now we can actually just write the distances, right? So we can use any two pairs and compare. And then we will have simultaneous equations in Y and Z.
Okay, and we will be able to do it easily. Okay, so I'll skip this one and we'll move to another type of question so that we can cover more questions. The length of the foot of perpendicular drawn from the point 3, 4, 5 on y-axis is length of the perpendicular. ठीक है, लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा है, लेकिन हम इसको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं, फुट ऑफ की तो जरूरत नहीं है बोलने। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट which is given on y-axis. कैसे करेंगे ये हम? How would we approach this? y-axis पे परपेंडिकुलर है, सबसे पहले तो y-axis पे x 0 होगा, x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, ठीक है ना। तो ये जो भी पॉइंट है, लेट्स कॉल इट q जो पॉइंट है ये किस फॉर्म का होगा? x भी 0 है, z भी 0 है। What will be the value of y? तो वो होगी 4, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला बाद में लगेगा, पहले हमें इसका y की वैल्यू निकालनी है, राइट? y की वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी, क्योंकि इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस, यानी कि जो y की रीडिंग है वही है। जब हम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वही तो हमें रीडिंग देता है ना किसी पॉइंट की, राइट? 2 डायमेंशनल में सोचिए कि अगर एक पॉइंट है 2,3, उससे मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर क्या रीड करेगा? ये 3 तो रीड करेगा, राइट? तो किसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर Yes. डाल के ही हम उसका रीडिंग लेते हैं, है ना? तो सिंपल सी बात है कि y, तो अब हमें p भी पता है, q भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, राइट? विच इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट इज द लेंथ, 9 प्लस 25 विच इज 30, तो b आ जाएगा आंसर, ठीक है? What is the perpendicular distance of the point from xy plane? अब xy plane से डिस्टेंस बताना है। तो वो पॉइंट Q जो xy प्लेन पे है परपेंडिकुलर, वो क्या है हमें वो बताना है, फिर डिस्टेंस निकालना है ट्रिवियल, ठीक है? तो एक तो ये है कि आप इसको Z 0 हाँ, तो इस पे z 0 होगा, ठीक है? तो 0 तो हो गया। अब बाकी 2 पॉइंट्स क्या होंगे? बाकी पॉइंट्स होंगे 6 एंड 7, राइट? क्योंकि हम एक्स जेड प्लेन पे आ रहे हैं परपेंडिकुलरली नीचे, एक्स वाई प्लेन पे ये कोई भी था, हम इससे ऐसे करके यहां आ रहे हैं, राइट? तो वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सो वो तो सेम है, और z की वैल्यू 0 तक आनी चाहिए प्लेन पे आने के लिए, ठीक है? और आप इस तरह डिस्टेंस निकाल सकते हो, ऑब्वियसली डिस्टेंस आपका 8 आ जाएगा। लेकिन इसको ये इतना मेहनत करने के बजाय द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज द z कोऑर्डिनेट, this is as simple, that is how we defined our xyz coordinates, right? Distance from xy plane is z coordinate, distance from zx plane is y coordinate, and so on, right? जब हमने डिस्टेंस
व्हाट इज द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, तो हमने डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन्स ही डिफाइन किए, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज द z कोऑर्डिनेट, वी डोंट इवन हैव टू यूज एनी फॉर्मूला, 8 becomes our answer straight up. ठीक है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने का में ही आपको प्रैक्टिस चाहिए, वरना ये इजी चैप्टर रहेगा. L is the foot of the perpendicular drawn from a point P on the xy plane. What are the coordinates of point L? अब ये तो आप बता सकते हैं, बताइए. XY प्लेन है, राइट? तो L क्या है? XY प्लेन. The B is the answer. हाँ, XY प्लेन मतलब Z 0 है और X और Y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट? तो B is the answer. L is the foot of the perpendicular drawn from the point 6, 7, 8 on x-axis. The coordinates of L are 6, 0, 0. very good. Okay. A, right? क्योंकि obviously x-axis पे ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और ये preserve रहेगा, तो 6, 0. What is the locus of the point for which y is equal to 0 and z is equal to 0? Locus का मतलब? तो पता नहीं. Locus का मतलब है वो point which is constrained, okay? The equation of a curve which is constrained by the given condition. ठीक है, तो एक कोई कर्व है जिसकी कंडीशन क्या है कि y भी उसमें हमेशा 0 रहता है और z भी हमेशा 0 रहता है. कर्व हो सकता है, सरफेस हो सकता है, जिसमें हमेशा ये The कंडीशन. equation of x-axis. हाँ, तो x एक्सिस जो है उस पे y और z हमेशा 0 होते हैं, तो दिस इज द आंसर. ठीक है, तो लोकस का मतलब केवल है कि वो कर्व या सरफेस या वॉल्यूम जिसमें वो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं. ठीक है. A line is parallel to xy plane if all the points on the line have equal xy प्लेन से एक लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन एक प्लेन से कब पैरेलल होती है? जब वो एक पैरेलल प्लेन पे होती है, राइट? तो एक्स वाई So वो इसका प्लेन. डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है. ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे कोई प्लेन होगा ऐसे, उस पे एक लाइन है, इस लाइन में क्या सबका सेम है? z कोऑर्डिनेट, राइट? तो इस वाले प्लेन पे या इसके जैसे किसी प्लेन पर एक लाइन है, तो इसमें क्या होता है कि z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है. एक्स वाई में तो z 0 है, यहाँ पे z कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, बस इतना ही फर्क. अंडरस्टूड, राइट? So we are coming to the end of this class now. So when is your exam, maths exam? The 7. Okay, all the very best. तो कल तो क्लास होगी नहीं क्योंकि आपके कोई और एग्जाम होगा कल. ठीक है? If you have any doubts, Yes, do sir. let me know. Okay, we are coming to an end, so this meeting will get over now. All the best. Thank you. Bye bye.